أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Let me connect my microphone. Sorry. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yesterday we learned about izhar, and the rule of izhar is that if noon sakin or noon tanween is followed by these 6 letters, any one of these 6 letters, hamza, ha, ain, ha, ghain, kha, then the sound of noon will be very clear, complete, clear, and manifest. Like an'amta, not an'amta. Min ilmin, in khiftum. Hadithin ghairi, not hadithin ghairi. Okay? But if noon sakin or noon tanween is followed by these 7 letters, any one of these 7 letters. Number 1, ba, ya, ra, mim, lam, waw, noon. Normally, this is called hurufe yarmaloon and ba. Okay. So if noon sakin is followed by, is not followed by these 7 and hurufe halki, these 7 and hurufe halki, these 7 or hurufe halki, then the sound of noon will be a little bit hidden, like noon gunna. So this is what today we are going to learn, and this is called ikhfa. Ikhfa means to hide something. So we don't pronounce noon clearly. It means that we are hiding something. We are hiding the sound of noon. So we are going to practice again. Izhar is when noon sakin or noon tanween is followed by any one of huruf halki. Izhar is when noon sakin or noon tanween is not followed by followed by any one of huruf halki and huruf yarmaluna ba. Ba, ya, ra, mim, lam, waw, noon. Then we will do ikhfa. For example, afternoon sakin, noon tanween is ba. We don't do ikhfa. We do iklab. Mim baini aidihim. If afternoon sakin, noon tanween comes ya, we do idgham tam. Ya or waw. Mim walayatihim. Munadiyan yunadi. In case of ya. If after noon sakin or noon tanween comes ra or lam, we do idgham tam. Mir rabbihim. Likewise is case of lam. And if after noon sakin or noon tanween comes mim or noon, we prolong a little bit
than other letters. So every letter has his own function, own rule. But if noon sakin or noon tanween is not followed by any one of huruf halki or huruf yarmaluna ba, then we will do ikhfa. Today we are going to practice it. Okay. Unsayaini. Unsayaini. It is not unsayaini. Why? Because noon sakin is not followed by any huruf halki or any huruf yarmaluna ba. Yarmaluna ba is ya, ra, mim, lam, waw, noon, ba. Anjainakum. Anjainakum. Noon sakin is not followed by any huruf halki or huruf yarmaluna ba. So noon will be hidden a little bit and will be pronounced like, not 100% like, but like noon una. To understand how we do ikfa, please focus on my photo. So look at me. For example, this is our tongue. Okay, and this is upper side of tongue, upper side of our mouth. तालु, ये तालु है, ठीक है, ये जबान है. So when we pronounce noon, when we do ikhfa on noon sakin or noon tanween, what we do, this tongue comes here without touching the upper side of our mouth, without touching talu. So comes here, tongue comes here, then goes back. This is the way you can do ikhfa. But your tongue will touch on the sides a little bit. Otherwise, you will not pronounce noon properly. Normally, when we pronounce noon, our tongue or tip of our tongue touches in the root of teeth here, noon. But in case of ikhfa, you don't touch your tongue. Tongue comes here without touching talu, without touching the upper part of your mouth here. But both sides do touch a little bit, okay, here. Then goes back. And naturally you find the proper time to do ikhfa. For example, unsayaini, 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 anjainakum, anjainakum. But it will be learned with practice. Okay. Min sabilin, min sabilin, unzila. Now you repeat after me. I have taken more time. Unsayaini, anjainakum, anjainakum. We are not doing ikfa on this noon. We are doing on this noon. That's why the writer of Qaida has put 2 dashes here.
أنجيناكم من سبيل من سبيل أنزل أنزل فإن تنازعتم فإن تنازعتم if there is only the word فإن and you stop there, you will not do ikfa. But if you continue, then you will. Okay. إن كنتم قوما صالحين. Now, in this phrase, we have done 3 times. We have done ikfa 3 times. This noon, second noon, and this is third noon tanween, noon tanween. إن كنتم قوما صالحين. Inshallah, we will continue, and now we learn the Nazra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. I have stopped here, but there are 2 signs, Kaf and La. Kaf tells me that you have to stop here, but La tells me that I cannot stop here, I should continue. But in this case, I have to follow the upper one. So that is La. I cannot stop. But for the reason of breath, I have stopped. That's why I will start a little bit from a little bit back. So the phrase is complete. مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Yakadul barku. Yakadu and lam has sukoon, so we will join dal with lam. Yakadul barku. Yakadul barku. In this phrase, we have two types of kaf. Kaf of Makkah and kaf of Qadian. In any way you can mention. You can say kaf kitab and kaf qalam. Okay. These are different. These are different makharij, different places for sound to come out. It is not qa, yaqadul barku, not yakadul barku, simple kaf. And this kaf, the second kaf, the sound of second kaf will come from the throat. Qaf, 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 not kaf. Qaf, a little bit down. Qaf, but the simple kaf is simple kaf. Kaf, kaf, tongue and upper part of the mouth. Kaf, 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 kaf. But this second kaf, which has 2 dots, 2 nuktas, it comes from halq. Qaf, 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 qaf. Yakadul barqu. Yakadul barqu. Yakhtafu. Yakhtafu. Yakhtafu.
absarahum, absarahum. So ba is one of the huruf kalkala. So we will do kalkala and we will shake the sound of ba. It is not absarahum, absarahum. That's wrong. It is absarahum, absarahum, absarahum. Kullama, meme has a small madda, so it is prolonged equal to 3 alif. Kullama adaa, it is 5 equal to 5 alif because we find here big madda. Adaa lahum mashaw. We have learned that if after sukoon is tashdid, this letter of sukoon will not be pronounced. Is a letter which has sukoon, a sakin letter is followed by tashdid, then this sakin harf, this sakin letter will not be pronounced. So we skip this meme and we join ha with meme, second meme. Lahum mashaw, lahum mashaw, fihi, fihi, wa iza aslama alayhim qamu. Please repeat after me. Yakadul barqu, yakadul barqu, yakhtafu absarahum, yakhtafu absarahum, kullama adaa lahum mashaw, lahum mashaw, fihi, wa iza azlama, wa iza azlama alayhim, alayhim qamu, qamu. Okay, now we learn the translation. Inshallah, the second half of the verse we will learn tomorrow. Yakado, करीब है, it might be, करीब है, अल बरको, अल बरको, lightning, lightning, बिजली, जो आसमानी बिजली है वो. वैसे जो दूसरी बिजली है उसको अरबी में बर्क नहीं कहते, उसको अल कहरबा कहते हैं. यख्ताफु, यख्ताफु, to strike somebody or destroy somebody. Abswarahum, their vision. Allah Ta'ala might destroy their vision. Kullama, whenever, jab kabhi, adaa, it flashes, lahum, for them, mashaw, they walk. Literally it is past, they walked, they walked. But in this situation, because it is this conduct of people has not changed, this is the same forever, so we can also translate it in present. But literally, if you ask me literally, it is past. Mashaw fi, they
walk in its light. Fihi, in it, mean in its light. Wa iza, and when. Aslama, when it is dark. Alayhim, for them. Qamu, they stand still. यकादु, मुमकिन है, करीब है, अलबर्क को, के बिजली, यख्तफु, उचक कर ले जाए, छीन ले, तबाह कर दे, अबसारहुम, उनकी बिनाई, उनकी देखने की ताकत। यही वजह है जो मुनाफिक बन जाते हैं, उनके साथ यही होता है, वो सोचने समझने की ताकत से बेचारे महरूम हो जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कभी इस सिचुएशन में ना डाले। अल्लाह ताला ने क्या डालना है, हम खुद ही अपने आप को डालते हैं। कुल्ला माँ, जब कभी, अज़ा, वो रोशन हो जाती है, या लफ्ज़ी तर्जुमा वो रोशन कर देती है, यानी वो बिजली जो है वो रोशन कर देती है, रोशनी कर देती है। लहुम, उनके लिए। मशौ, तो वो चलने लगते हैं। फी है, उसमें, यानी उस रोशनी में चलने लगते हैं। व इज़ा, और जब, अस्लामा, अंधेरा कर देती है वो बिजली, अलैहिम, उन पर, कामू, तो वो खड़े हो जाते हैं। चाहिए तो ये था कि अगर ईमान नसीब हुआ है और किसी वक्त आ गया है इब्तिला, इम्तिहान आ गया है, तो उस वक्त पिछली सारी बातों को भूलने की बजाय पिछली बातों से फ़ायदा उठाते हुए अपने ईमान को बंदा मजबूत करे। लेकिन जो मुनाफिक होते हैं वो क्या करते हैं, जितनी देर तक देखते रहे कि ठीक है, लेकिन जब अल्लाह ताला इम्तिहान लिया तो पिछली सारी बातें भुला दी, उनसे कोई फ़ायदा न उठाया और फटाफट जाके इनकार कर दिया। ये फ़र्क होता है और ये खतरे की बात है। यकादुल बर्क को, करीब है कि बिजली, यख्तफु, उचक कर ले जाए, अबसारहुम, उनकी बिनाई, कुल्लमा, जब कभी, अज़ा, वो रोशन करती है, वो रोशनी करती है, लहुम, उनके लिए, मशौफी है, तो वो उसमें चलने लगते हैं। अगर जमात में सारा कुछ ठीक चल रहा है तो जमात के साथ साथ चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। कोई बात समझ नहीं लगी अपने आप को या ठोकर लगी किसी वजह से, तो वो सारी पिछली अच्छी बातें जीरो हो गई और एक बात को पकड़ के तो उस पर बैठ गए और इजहार कर दिया अपना। ये दुआ करने की बहुत ज़रूरत है। मशौफी है, वो उसमें चलने लगते हैं। व इज़ा अज़लमा, और जब कभी वो अंधेरा कर देती है, आगे नज़र नहीं आता कि ये बात ऐसे क्यों है, अकल नहीं मानती। अलैहिम, जब वो अंधेरा कर देती है उन पर, कामू, तो वो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि हर चीज़ हमेशा तुम्हें समझ लगेगी इसलिए तुमने दीन को मानना है। अल्लाह ताला कहता है मैं इम्तिहान भी लेता हूँ। वाकया इफ्क जो था, कितना बड़ा इम्तिहान था, कितनी बड़ी आजमाइश थी। लोगों को बात समझ नहीं लगती थी, लेकिन जो बदकिस्मत थे वो गिर गए और जो खुशकिस्मत थे वो बच गए। उन्होंने बाकी चीज़ों को मद्देनजर रखा और उसकी परवाह नहीं की। तो ये फ़र्क होता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकादुल बरक़ु यख्तफु अबसारहुम, कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर।